Hi everyone. Look at this question. First of all, read the question carefully. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 4 dry cell, 1.5 volt each, 2 ohm, 6 ohm, 16 ohm resistors. All are connected in series. Put an ammeter to measure the current in a circuit. Okay. So simply like they are asking the schematic diagram. So it's very easy. Like this: 2 ohm, 6 ohm, 16 ohm, and we have a battery of 4 dry cell. 1, 2, 3, this is 4. Clear? Now we need to connect ammeter. I have connected like this. This is the ammeter. Alright. Now what they're asking? Voltmeter across a 16 ohm resistor. So 2, 6, 16. This is 2 ohm, 6 ohm, 16 ohm. Now we need to connect voltmeter across 16 ohm like this. Voltmeter. Alright. This is plus, this is minus. Now each dry cell is having the voltage 1.5. So what is the voltage of this battery? 1.5 plus 1.5 4 times. Alright. This is 6 volt. Clear? You can say this is V1. Okay. Otherwise you will be confused. ये 6 वोल्ट ये यूनिट है बेटा. ठीक है. एमीटर रीडिंग एमीटर करता है क्या है बेटा? इट इज बेसिकली मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्क्यूट. बैटरी ने कितना करंट सप्लाई करा, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. मेजर द करंट. जैसे बैटरी ने करंट दिया आई, इसे कौन मेजर करेगा बेटा? एमीटर. अब इसकी वैल्यू निकाल ली हमको, तो इजी है. 2, 6, 16. देखो वोल्ट मीटर क्या होता है? ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस. इसलिए इसको पैरेलल में लगाते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस. एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो रेजिस्टेंस. ओके. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. करंट आया, करंट ऐसे गया. ठीक है. Very small fraction of current will be drawn by the voltmeter, but we will neglect. Okay. Like this. करंट आया. अगर बैटरी ने आई करंट दिया तो बैटरी कितना करंट लेगी बेटा? आई. क्लियर? सिंपली लाइक दिस इज 6 वोल्ट. आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वी बाई आई. इक्विवेलेंट सर्किट बना लो इनका. क्या होगा? 16, 6, 22, 22, 23, 24. Like this. Okay, this is our ammeter. Clear? Like this. V4. All right. 6 वोल्ट. तो आपको आर इक्विवेलेंट पता है कितना है बेटा? अब पूरा का पूरा 6 किसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है बेटा? 24. तो कितना आएगा? तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 एम्पियर. पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? 1/4 एम्पियर. Voltmeter reading when the key is closed. Now key is closed. Where is key? Key is this. This is a key. Actually, I forget. This is a key. Okay. Understood? So you have calculated like current. Consider this point is A. This point is B. Okay. Now if you see that 16 ohm.
Voltmeter is connected here, like this, like this. And this resistance is 16 ohm. And how much current is passing? 1 by 4 ampere. This is point A, point B. So voltmeter is actually doing what? It measure the how much drop in voltage. What is the potential difference across the ends of the resistor or conductor? ये जो ए से बी, देखो ए क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ए किस पे होगा, हाई वोल्टेज, बी किस पे होगा, लो वोल्टेज पे। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इंटू आर। ये कौन मेजर करके देगा बेटा, वोल्ट मीटर। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट? सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर will be 4 volt.